Alrighty, we are live. Hello, hello, hello. Good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 2nd of March 2026. We have started a new month. 2 months have passed. March has started. Today is 2nd of March and we are live. Who all are here on the stream? Can we have some responses in the chat box very, very quickly so that we can start the session? Shaura is here, good evening. Yash is here, good evening. Rashi is here, good evening. Very, very good evening. Namaste, Adab, Sat Shri Akal to everyone who has joined. Prasiti is here, Swara is here. Good evening, guys. कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? How is everything going? Parth is here, Charmi is here, Riddhi is here saying boards खत्म चलो congratulations. शौर्य saying सर ऐसा लग रहा है ट्रम्प लड़ रहा है जिससे हमारा सिलेबस बढ़े. That's true. That's very true. But कोई बात नहीं, इससे हमारा सिलेबस और ज़्यादा थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी हो जाता है क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक बन जाते हैं एंड फिर आप थोड़ी सी एज गेन कर सकते हैं. Siddhi is here, good evening. Gopal is saying good evening Master G. I don't know how I feel about being called Master G. Makes me feel slightly old. I would not prefer that salutation. Master G sounds a little old. Also sounds like a tailor. So let's refrain from calling me Master G. Okay. Sir is fine, Bhaiya is fine, even Govind is fine. Riddhi saying, can you please reply to my email today if possible? It's a little urgent. ऐसा क्या email हो गया भाई? मैंने ईमेल यार मैं वीकेंड्स पे ना थोड़ा कम ही चेक करता हूँ. सो चलो ठीक है, आई विल डेफिनेटली चेक योर ईमेल. लेट मी सी. अर्जेंट एडवाइस चाहिए आपको रिगार्डिंग प्रेप. ओके, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट आफ्टर द क्लास. ठीक है. ओके, गोपाल इज सेइंग अरे कोई चक्कर नहीं, मजाक कर रहा था. सर इज सेइंग सर अगर एक मॉक में कम स्कोर आया हो तो हाउ टू रिफ्रेन फ्रॉम फॉलिंग इन डिप्रेशन. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो सी मॉक्स को यू गाइस टेक टू सीरियसली से मतलब है सीरियसली तो लेना ही है, बट यू टेक द आउटकम टू सीरियसली. प्रोसेस को सीरियसली लो, आउटकम को उतना सीरियस मत लो. ठीक है, मॉक्स में जो स्कोर आ रहा है दैट इज नॉट वेरी मटीरियल टू द लॉन्ग टर्म सक्सेस इन क्लैट. So अच्छा स्कोर आता है तो भी it should be fine, खराब स्कोर आता है तो भी it should be fine. What's important is taking the learning away from that particular mock, analyzing it very nicely, being a little stoic about it. Stoic का अगर आपको मतलब नहीं पता तो क्लास के बाद जाके गूगल करना stoic क्या होता है, stoicism क्या होता है, and that is how you should approach your mocks. I know it is quite human to feel a little dejected after a bad mock and feel a little elated after a good mock. That's quite natural, but we'll try to refrain from going overboard, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, and that's true for life as well. So without sounding too philosophical, don't just give too much importance to mock score. बस जैसा हुआ ठीक है, आगे बढ़ो, it's fine. डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, डिप्रेशन तक तो नहीं पहुंचना है. जैसे रेखा जी कहती है ना पॉल्यूशन को कि तुझे जाना पड़ेगा भाई, अब तुझे जाना पड़ेगा, तो वैसे ही आप भी बोलो डिप्रेशन को कि भाई अब तुझे जाना पड़ेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता. ठीक है, that is how you deal with depression, by not letting it arrive in the first place. Rishit is saying, hello sir, Rishit here, wrapped up with exams, finally back to regular classes. Welcome back to regular classes and congratulations on finishing your exams. Seniors told mocks are mirror. They definitely are, but that does not mean that you cannot improve that mirror image. They are a mirror of your present day performance or your performance in those specific 2 hours. They don't define of how you look or how you're going to be looking in the next few months or after the CLAT exam. So yeah, take them as a mirror, but don't be too conscious of the image is what I would say. Alisa Liu changed mindset regarding failure and success. I don't know who she is or who he is, but whatever helps you guys. How many mocks to be done before CLAT? See, it's hard to put a number to it, but objectively speaking, at least I would say 40 to 50 mocks, if not more. See, it's more about quality and how much you derive as a learning from a particular mock rather than the number of mocks. So I would say 40 is the number which you should look at.
50 also is fine. Anything above 70, 80, I think is an overkill for an exam like CLAT. I think the range between 40 to 70 works for most aspirants. Now you can decide which end of the spectrum you want to be at. शौर्य सिंह सर, कभी कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है तो दूसरा टॉपिक खराब हो जाता है, दैट्स वेरी नेचुरल. उसमें बस आपको देखना है कि क्यों वो टॉपिक खराब हुआ. जो खराब हुआ, जो अच्छा जा रहा है उसको अच्छा जाने दो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कंटिन्यू दैट. जो खराब जा रहा है, यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि भाई क्या दिक्कत आ गई इसमें. वाज इट अ सिली मिस्टेक, वाज इट अ माइंडसेट इशू, वाज इट अ कंसेप्चुअल इशू, वाज इट अ टाइम मैनेजमेंट इशू. जस्ट नैरो इट डाउन एंड ट्राई टू नॉट डू इट अगेन इन द नेक्स्ट मॉक. Simple. Prasthiti is saying, sir, my mock scores are fluctuating a lot. I want them to be more consistent, but I'm unable to pinpoint the issue. Can you give a little idea on how to do mock analysis properly? I'll definitely do that in a special strategy session, which we are having on 5th of March, 8:45, right after the class. Okay, that's a dedicated strategy session on how to plan your next 9 months and how to look at mocks. How to do mock analysis, how to do subject-wise analysis, section-wise analysis, how to do time management, how to make your weekly schedule. So there's a dedicated session I'm coming up with for you guys on the YouTube channel itself, live at 8:45 p.m., 5th of March. Mark your calendar, mark your dates, and we'll discuss all of these things in utmost detail with a plan on 5th of March. ठीक है, होली के बाद. Alisa Liu won gold medal in women's figure skating Winter Olympics 2026. Oh, very, very nice. I did not follow that. She's an icon. That's good. So they're saying, was the same condition of last year as 100%? This is every year. This is what I also went through. So I can completely relate to what you guys are feeling right now. I went through it a couple of times because I took CLAT twice. So yeah, it's completely fine, completely natural. Just hold your nerves and just stay consistent to the process is what I would say. Okay, chalo. With that, let's begin our today's discussion on a very positive, very enthusiastic note. Let's see today's agenda. 3 articles हैं जो हम discuss करेंगे on the PPT. One is of course the primary thing in news, which is the US-Israel versus Iran wala war, which was the big event which happened over the weekend. एंड करेंगे उसकी बातचीत, थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझेंगे उसकी, थोड़ी सी उसकी ज्योग्राफी समझेंगे, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री समझेंगे, थोड़े से उसके फ्यूचर implications समझेंगे. Then couple of articles which are editorials. One is regarding the 16th Finance Commission, although we have talked about it considerably in the past few sessions, but once again, then we have another editorial which talks about Skill India and how we can utilize our demographic dividend, which means us having a young population as a country. है ना. तो ये 3 चीज़ों की बातें करेंगे ऑन द पीपीटी. उसके अलावा न्यूज़पेपर पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे 6-7 आर्टिकल्स हैं एज यूजुअल विच वुड बी रेलेवेंट फॉर आवर क्लैट. उनको डिस्कस करेंगे एंड 3 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ द डे लाइक ऑलवेज. सो दैट इज व्हाट इज ऑन टुडेज एजेंडा. Shaurya saying thank you for clearing self-doubt questions. No problem. Shaurya saying felt relieved. चलो, बहुत बढ़िया. Let's go to the newspaper then. US-Israel वाला चलो ठीक है, बाद में समझाता हूँ आपको. स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से हम लोग. बाकी आई होप आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा न्यूज़ में क्या चल रहा है. आई रियली होप दैट यू गाइज आर डूइंग योर ओन लेवल ऑफ सेल्फ स्टडी, ड्यू डिलिजेंस, प्रिपरेशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. विकीपीडिया पे जाओ, जीके टुडे पे जाओ, यूपीएससी वाली वेबसाइट्स पे जाओ, जहां मर्जी जाके आपको पढ़ना है, बट ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दीज हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स, क्योंकि इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है. एंड ऑफ कोर्स if you are well aware of them, then it gets easier to revise them after a while has passed. ठीक है, चलो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं आज के. ईरान हिट्स इजराइल एंड यूएस बेसेस आफ्टर किलिंग ऑफ खमेनी. हु वाज खमेनी? Ayatollah Khamenei. Unless you live under a rock, you must be aware by now that Ayatollah Khamenei was the supreme leader of Iran. Who's the president of Iran is my question to you guys in the chat box. दोनों अलग अलग leaders हैं. कई बार students get confused between the president and the supreme leader. Ayatollah Khamenei was the supreme leader. President का नाम आप लोग बताओ in the chat box. बाकी हम लोगों को पता है कि this major conflict has escalated between the 3 countries, Iran, Israel and US. US and Israel are on one side. Iran is the other belligerent on the other side. And this intensified after the US and Israeli airstrikes, which killed Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and some other senior Iranian leaders, some senior military leaders as well. Now Iran is saying, hum lenge badla.
लीडर का, मिलिट्री लीडर का, सीनियर एडवाइजर का, सबका बदला लेगा तेरा ईरान, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड ऐसा कह के उन्होंने बदला लेना स्टार्ट भी कर दिया। दे लॉन्च मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन टारगेट्स इन इजराइल एंड नियर बाय गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, वट एवर यू माइट कॉल इट, जहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, जहाँ पे यूएस के एयर बेसिस हैं, जहाँ पे यूएस के न्यूक्लियर बेसिस हैं। And these explosions were reported in Iran as well, in their capital Tehran, जहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। 200 plus people have died in Iran, and काफी सारी जो है मिसाइल स्ट्राइक्स और इंटरसेप्शंस हुई in Tel Aviv, which is the capital of Israel. And a strike also hit a synagogue in a place called Beit Shemesh. Synagogue is a place where the Jews pray. जैसे हिंदूज का टेम्पल होता है, वैसे Jews का synagogue होता है, जहाँ पे multiple people were killed. And US also got involved in this with some military personnel getting killed. Donald Trump ने कहा कि अगर और escalation किया ईरान ने तो हमारी तरफ से भी retaliation होगा। बाकी देर आर रिपोर्ट्स कमिंग इन दैट जो इन्होंने नया लीडर अपॉइंट किया था आफ्टर खमेनी, दैट लीडर हैज आल्सो बीन किल्ड। इट्स नॉट वेरीफाइड एज ऑफ नाउ, आई जस्ट read it by on social media, so I'm not gonna say that's credible news for now. कल तक में भी हमें पता चल जाएगा, but yeah, news is coming that he has also been killed. ठीक है जी। चैट में क्या चल रहा है? मसूद Pezeshkian is the right answer, absolutely correct. Charmi is saying, do you think it's too late to prepare for CLAT now with HIMSS? Absolutely not, 100% not. It is the right time to start preparation for CLAT, and CLAT is an exam which can be easily cracked with 6 to 7 months of dedicated preparation. I know people who have done it in 3 to 4 months as well. I, as a example, although I don't count myself as the fair example because मैंने एक साल पहले भी तैयारी करी थी, but in my second attempt I barely studied for a couple of months, 3 months, and got through. So yeah, it depends on where you're starting from. अगर आपकी English बहुत ही weak है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, अगर आपकी बेसिक रीजनिंग क्वांट बहुत ज़्यादा वीक है, और अगर आपको करंट अफेयर्स का सी भी नहीं आता है या जीके का जी भी नहीं आता है, तो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, नो डाउट अबाउट दैट। इट इज एन एग्जाम विच फेवर्स, कहना नहीं चाहिए, बट इट फेवर्स एलिटिज्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव हैड गुड एक्सपोजर टू good English skills, communication skills, reasoning skills have a certain edge in this particular exam. That is an undeniable fact. But that being said, if you are a half decent student, studied in an English medium school, you have a very fair chance to crack it if you start now. ठीक है, alrighty. Masood Pezeshkian एकदम सही है. Which conflict should we be following besides this, as there are many going on? You have to follow all the major ones यार. Pakistan, Afghanistan you have to follow, Russia, Ukraine you have to follow, Israel, Hamas you have to follow. अब ये Iran वाला also you have to follow. Also keep a tab on what's happening in Africa. Also keep a tab on what's happening in US, Venezuela, Greenland, all of those things. You have to follow all these major geopolitical scenarios. ठीक है. Jerusalem is Israel's capital. They have two capitals. Jerusalem भी है, Tel Aviv भी है. Official purposes के लिए it's usually Tel Aviv, and cultural purposes के लिए it's usually Jerusalem. So yeah, that's how it is. Trump trying his best to get away from Epstein files. Yes, that's what a lot of people are claiming, that this is a distraction to distract the world from the Epstein files. And if it is, then it's quite successful, I would say. All right. Baki, right hand side, you see airlines have cancelled a lot of flights going to these nations which have been attacked. Most of these long haul flights, which also have a layover in places like UAE, Saudi, etc., they have also been sort of suspended. So yeah, that's quite natural. इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है. At least 18 killed in blast at Nagpur factory. नागपुर की एक फैक्ट्री है रॉल गांव विलेज में, यहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया and 18 people lost their lives. This factory was owned by SBL Energy Limited. This was a mining and industrial explosives manufacturing unit. तो explosive manufacturing में explosion हो गया, 18 लोगों की जान चली गई. City-based news is not important for us. We can skip through it. State-based politics is also not important for us. You can usually skim through it in most cases, unless there is something very significant. People of Puducherry will re-elect India government, says PM, unveils 2,700 crore projects. Okay. Will safeguard traditions of Tamil Nadu Hill Temple.
says MK Stalin, who's the CM of Tamil Nadu. Alright, यहाँ पे कुछ important है हमारे लिए? नहीं, nothing important here. Fireworks unit blast, ये वही नागपुर वाला blast है, ये दूसरा है. Okay, this is something else. Fireworks unit blast exposes laxity in ensuring safety steps. अच्छा, ये generic article है जो बता रहा है कि पहले भी इस टाइप के काफी blast हो चुके हैं. And this is a matter of concern. 20 people died in a blast in a firecrackers unit in Andhra Pradesh on Saturday as well. All right. CGI says judiciary must build public trust. Okay. I was also reading another article which said that CGI went to GNLU, probably in a conference or some ceremony, where he said that it is concerning that a lot of law graduates are opting for corporate law firm jobs, and not coming towards litigation and judiciary. And that is concerning. What is your take on that, guys? Are you guys inclined towards corporate, making money right off the get-go after graduating? Or do you want to grind in litigation, give those 10, 15 hard years in litigation? Or maybe go for judiciary. Judiciary maybe a 3-year practice rule again, so that has made things a little more tougher and more unpredictable. But yeah, anyway, what is your inclination as of now? It's completely fine if you don't have an inclination right now. But abhi ke liye, where are you guys inclined towards? Corporate, judiciary, litigation, something else? Do let me know in the chat. It's always good to know what is the new generation thinking. Not that I'm from an old generation, but what is the latest generation thinking? Okay. Former Maoist leader returns to hometown in Telangana, meets kin after 4 decades. Kin matlab family members. ओके, एडिटोरियल सेक्शन पे आ गए हम. स्टेट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए. 16 फाइनेंस कमीशन मिसेज एंड कंसर्न्स. तो क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्या कंसर्न्स हैं, उसकी बात करता है ये आर्टिकल. अच्छा आर्टिकल है. पीपल हु आर फ्रॉम अ नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, I would suggest that you guys read these kind of articles in entirety because it helps you understand that jargon, that language, which definitely helps in reading comprehension and reasoning as well. So कोशिश करा करो कि अपने सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़े हैं उसके बियॉन्ड एक्लेक्टिक रीडिंग करी जाए, नए डाइवर्स टॉपिक्स पे आर्टिकल पढ़े जाए. आर्टिकल्स लाइक दीज. ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, परसेंटेज दिए हुए हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. इवैल्यूएटिंग द फेडरल इम्प्लीकेशंस ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. अब आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन. जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है. आई एम एक्सपेक्टिंग most of you to know this because we have discussed finance commission multiple times before. So please let me know in the chat if you guys are aware. Okay, chat में काफी सारे opinions हैं. I would love to read them. Let's see. Chandralekha says, good evening sir, board exams के बीच में confusion regarding admission. I'm going to SLS Hyderabad over bit slow, but people are saying you're letting go of a great opportunity. I don't think so. If I were in your position, I would also choose SLS Hyderabad over BITS Law. BITS Law is a relatively newer institute which is yet to prove its, I would say, mettle in the legal world. And I don't think you're making a bad choice. But yeah, it's completely a personal choice, so you decide. I would not influence your decision. But ऐसा कुछ नहीं है कि BITS Law छोड़ के बहुत बड़ा great opportunity मिस हो जाए. Nothing like that. Proponent's argument can be considered as conclusion or not. Depends on the context. And we took the advice of you and other teachers plus people, and 99% said SLS Hyderabad is better. Because it is. That's an objective to nahi, but that's a very evident fact, I would say. And the criticize, just remove a para from NCRT just for criticizing them. उस पे भी एक editorial article आया है आज. We'll discuss it. Corporate litigation has a lot of running around and all. That's true. Feels like depends on the very true. Financial condition is very important. Corporate is still like one code back and forth only. Not necessarily. There's not a lot of court visit unless you are in the litigation team. Corporate law is more favorable, easier, because fighting in court is not easy. Oh, my sweet summer child. If you think corporate is easy,
then God bless you. It's not easy, bhai. It's not easy by any means, but it is definitely monetarily rewarding for the effort you put in. ठीक है, I have a lot of friends in corporate, seniors in corporate, now juniors also in corporate. It's not easy by any means. It's a tough life. But anyway, it's nice. Litigation is kept undervalued, inclined towards litigation. Article 280 is the right answer. एब्सोल्युटली करेक्ट. आर्टिकल 11 कहाँ से आ गया सिद्धि? फाइनेंस कमीशन पूछ रहा था मैं. दैट इज आर्टिकल 280. एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. फिर इस पे आएंगे हम वापस फाइनेंस कमीशन पे. ऑन द पीपीटी विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. इंपीरियल वॉर, अमेरिकन एंड इजरायली ठगरी. दिस इज अ वर्ड व्हिच has been borrowed from the Hindi word thug, which is lootpat. Thuggery has no place in the international system. तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वही बात हो रही है. Where this article essentially criticizes Donald Trump and Netanyahu for starting a war with Iran that could destabilize the entire West Asian region and harm the global economy. This started on 28th of February, जहाँ पे US and Israel launched large-scale attacks on Iran, and Khamenei and other leaders were killed. And the article says that this was not a preemptive strike. Preemptive का मतलब होता है कि आपके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ हो कि आप पे अटैक होने वाला है या आपके इंटरेस्ट जेपरडाइज होने वाले हैं, तो आप पहले से अटैक कर दो, प्री एम्प्ट कर लो, है ना. एंड देयर वाज नो क्लियर प्रूफ दैट ईरान वाज अबाउट टू अटैक. And Iran was reportedly in active negotiations with the US. We were following the updates कि negotiation चल रहा है लगातार, table talks चल रही हैं. And ओमान वॉज मीडिएटिंग दीज टॉक्स एज वेल. ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था न्यूक्लियर डील क्लोज होने वाली है. उनका नाम है बदर अल बुसैदी. पता होना चाहिए आपको नाम. एंड दिस आर्टिकल क्लेम्स दैट डिप्लोमेसी एज अ रूट वाज कट शॉर्ट बाय दिस मिलिट्री एक्शन. Things could have been resolved through diplomatic talks. And this article also tells us how in 2018 Trump withdrew from the 2015 nuclear agreement which was signed with Iran, which again worsened the tensions. बाकी फिर we all know कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है. फिर ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए इजरायली बेसिस पे, यूएस बेसिस पे. एंड they also announced the closure of the Strait of Hormuz. Now Strait of Hormuz is a very important water body. फ्रॉम व्हाट कॉन्टेक्स्ट? आप लोग बताओ चैट बॉक्स में. अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ के होमवर्क करके आए हो या न्यूज़ भी देखी होगी, अगर आपने अपने फादर साहब को या ग्रैंडफादर साहब को या किसी को भी घर में सुनते हुए, तो ये तो मेरे ख्याल से न्यूज़ पे बज ही रहा है पूरे टाइम कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान कर रहा है सॉर्ट ऑफ मोबिलाइज. क्यों कर रहा है? जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? Will AI replace corporate law like research and stuff? To a certain extent, preliminary research would be delegated, but the real work, I don't think AI has evolved to that level. जहाँ पे lawyers can be replaced entirely by AI. That might not happen in the foreseeable next 5 to 6 years. That is what my personal guess is. I might be wrong. But I think law as a field involves a lot of subjectivity, involves a lot of human element, involves a lot of nuances, which are a little tough for AI to grasp and manipulate. Therefore, I feel law is slightly AI proof as compared to other professions. चाहे आप coding की, tech की बात करो तो I think law would be one of the later professions to get severely impacted by AI or negatively impacted by AI. Aradhya is here. Starting wars left and right is unbecoming of a Nobel Prize aspirant. Just wait and watch. Prasadi saying, I would love to go into family law, but it is quite underpaid unless you have high position. You have to build your practice slowly. It's not underpaid after a few years of hard work. But initially, yes, 100%. If you're a first gen lawyer, then you have to grind for the first few years. You guys saying, so do you think World War III can be seen in the future based on wars and their timelines? I mean, no one can predict it, to be honest, but I don't think so. I don't think World War III would break out because that is not beneficial for anyone in general. Like, अगर World War III होता है and
It would be of a larger scale if we are calling it a world war, which means all the major powers are involved. US is involved, Russia is involved, China is involved, Europe is involved. And a war of that scale with nuclear armed countries would end up really bad for everyone. So it's kind of like a lose lose proposition. Small skirmishes, small regional attacks, yes. World War III, unlikely, in my personal opinion. So I think this is actually pugnacious to just mention articles and take no step in international court. It's the main resource for oil and natural gas, 100%. That is what Strait of Hormuz is. Facilitates 30% world trade oil route. I think it's around 20 to 25%. But yes, you're almost correct. Oil transfer, key route for oil, joins the Persian Gulf and Gulf of Oman, correct, which is essentially the oil route through which export of oil happens from all the Gulf countries to other countries. Gateway for China, India, and Russia. In context of oil, sure, oil transportation. It's a blockade between Persian Gulf and Gulf of Oman. Yes, entry through Suez Canal. Everything is related to oil essentially. So all of you are correct in that matter. Prasad is saying, I think litigation is the most difficult to be replaced by AI because it requires a lot of different. Yes, that's what I was saying. क्लैट के क्वेश्चंस में फॉल्ट कर देता है, लॉ प्रैक्टिस में क्या करेगा गॉड नोस. या आई मीन रिसेंटली जजेस हैव rebuked lawyers for using AI for their arguments because it hallucinates a lot. It creates fake cases, it creates fake names, and in law you cannot meddle around with facts. That's the cardinal sin. So I don't see it anytime soon being widely used in the legal domain. But let's see. ChatGPT is not the AI; it's a chatbot. If they were to make an AI specific for litigation, then it can change. See, ultimately the core infrastructure is same. It's a large language model at the end of the day. Whatever you feed, it kind of regurgitates in a more coherent manner. That is what it does. But when you reach that stage where AI can think by itself, which people call as AGI or artificial general intelligence, where AI has a mind of its own, when that is a reality and not a far dream, then things would get interesting to see on how we navigate this legal landscape. But still, I think we are quite immune as a profession to AI for at least the next foreseeable 5-10 years. ओके, मूविंग अहेड. हाँ, ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ की ग्लोबल ऑयल शिपिंग रूट which could hurt global oil supplies, and a lot of countries would be affected, which also in retrospect tells you why US took control of Venezuela first and then moved towards this offensive preemptive strikes towards Iran, because they have secured their oil, or let's say they have hedged their oil to a certain extent as opposed to other countries. So yeah, it's quite interesting. बाकी तो वही सारी चीजें हैं. It talks about how international criminal court में things are going on, where Netanyahu is accused of war crimes, and we all know what Donald Trump is doing, has been doing in the past few months. So basically they condemn Trump and Netanyahu and says कि ऐसे लड़ाई मत करो, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है. एसेंस यही है आर्टिकल की. स्किल इंडिया एज अ हरक्यूलियन चैलेंज, गलगोटियन ब्लंडर्स. देखो, एक खराब इंसिडेंट चाहिए होता है नाम खराब करने के लिए. अब ब्लंडर के साथ एसोसिएट किया जा रहा है गलगोटिया को. So yeah, I mean, this is an interesting article which talks about demographic dividend and says how skilling India is a big challenge. Herculean मतलब Hercules से आया reference, which is a Greek mythological character who has a lot of strength and lifts the earth on his hand. But yeah, point is कि skill India को कैसे उसके truest potential पे लाया जाए. Reforming skill financing is crucial to harness India's demographic dividend, which means India's young population का जो एडवांटेज है हमारे पास. करेंगे इसकी थोड़ी बात ऑन द पीपीटी. लेफ्ट हैंड साइड पे सेलेक्टिव आउटरीच, व्हाट यू गाइस वर सेइंग, जुडिशरी सीम्स टू क्विक टू टेक ऑफेंस ओनली व्हेन इट सीज इटसेल्फ अंडर एन अटैक. तो आर्टिकल यही कह रहा है कि इतने टाइम से जो है लेजिस्लेशन पे या एग्जीक्यूटिव पे अगर कोई ऑफेंसिव रिमार्क्स होते हैं या कोई रेफरेंसेस होते हैं इन टेक्स्ट बुक, तो जुडिशरी कुछ नहीं कहती. जुडिशरी इज काइंड ऑफ नॉनशैलेंट टुवर्ड्स इट. बट जैसे ही जुडिशरी को कोई क्वेश्चन करता है तो जुडिशरी एकदम हाइपर एक्टिव हो जाती है, एक टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह, और इट स्टार्ट्स टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शन टू
protect itself. So yeah, that's pretty much it. इसमें और कुछ भी नहीं है. Just gives you examples of how judiciary is a little insensitive. How UGC rules prioritize quick justice. UGC rules regulations की हम बात कर चुके हैं. Equity वाले rules हैं जो अभी hold पे हैं. Because the language was vague, because there were a lot of other nuances which were problematic. एंड ये आर्टिकल हमें क्या बताता है? ये आर्टिकल हमें यही बताता है कि ये जो रेगुलेशंस हैं दे वर एम टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन. बट प्रोटेस्ट पे ट्रिगर हो गया क्योंकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके लिए कोई रिकोर्स इसमें नहीं था. एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे डाल दिया. बट दे से दैट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इज स्टिल अ वेरी रियल एंड ऑनगोइंग प्रॉब्लम. इसीलिए ये रूल्स लाए गए थे. अभी जो कंप्लेंट सिस्टम्स हैं वो काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी इनफेक्टिव हैं, काफ़ी बस सिंबॉलिक है, मीनिंगफुल नहीं है. एंड ये जो नए रूल्स थे इनसे कोशिश थी कि फास्ट एक्शन लिया जाए कंप्लेंट्स पे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, पनिशमेंट रेगुलेट करी जाए. एंड द कोर कंसर्न हेयर इज अगेन स्पीड वर्सेस जस्टिस. कि दस यूजीसी रेगुलेशंस जो नए वाले थे दे अज्यूम दैट फास्ट एक्शन मतलब फेयर जस्टिस, विच इज समटाइम्स आयरॉनिक बिकॉज एक तरफ आप कहते हो कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट दूसरी तरफ देयर इज आल्सो द प्रोवर्ब दैट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड. सो आर्टिकल यही आर्ग्यू करता है कि अगर जस्टिस बहुत स्लो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, और जस्टिस अगर बहुत फास्ट है तो वो फिर फेयर और केयरफुल जजमेंट के बेसिस पे नहीं है. एंड ये जो रूल्स थे दे रिक्वायर्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, क्विक फॉर्मेशन ऑफ committees, very strict timelines of inquiries, and threat of very serious penalties. So it was sort of like a fear mongering rather than fair access to justice. एंड इसमें काफ़ी वेग प्रोसीजर्स थे. इन्होंने ऑफेंसेस को क्लियरली डिफाइन नहीं किया था, पेनल्टीज को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया था, इंटरनल कमिटीज को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी इन्वेस्टिगेशन की. एंड दिस कुड हैव रिजल्टेड इन विजिबल एक्शन बट अनफेयर एक्शन. बाकी फिर उन्होंने एक दो इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दिए हैं कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ कैसा करती हैं, कोर्ट्स ने उन पे क्या एक्शन लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यही सारी बातें हैं. Talks about how it could impact teachers and institutions, how it could impact students who are from linguistic minorities or from rural areas जिनके पास equal ability नहीं है to file formal complaints, use this in fancy institutional language and navigate the processes of these committees. तो मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि इंटेंट अच्छी थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्पीड को. स्पीड का मतलब जस्टिस नहीं होता है. आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्लैरिटी, फेयरनेस एंड अ केयरफुल प्रोसेस विच इज नॉट टू डिलेड. दैट इज हाउ इट शुड वर्क. ठीक है जी. ऑलराइट, चैट में देखते हैं एक बार क्या चल रहा है. Should have seen that coming. Should have seen what coming. What's the context? Ayaka is saying, sir, why not toxic boyfriend? Why only toxic girlfriend? अरे मैं अपने एक्सपीरियंस से ही तो बात करूंगा. I am a straight guy, so I have not experienced toxic boyfriends, but you guys might have. I really hope you don't. But toxic can be anyone. It's not a gender specific thing. ठीक है. सर को टॉक्सिक बॉयफ्रेंड का एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली माय पॉइंट, राइट? सो समीर अहमद खान लुक्स एआई जनरेटेड. ओके, sure, no comment on that. UP receives over 84% of all out of state MP LATs fund. ये MP LATs हमने डिस्कस किया था. दिस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एंड 84% फंड्स जो है यूपी को चले गए हैं. नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. ठीक है, इसमें हमारे लिए डीप जाने के लिए कुछ नहीं है. मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन यूएस ईरान वॉर, इसके हम जिस्ट पढ़ते हैं. द आउटब्रेक ऑफ फ्रेश हॉस्टिलिटीज हैज ट्रिगर्ड अ न्यूली इंटीग्रेटेड रीजनल एयर डिफेंस नेटवर्क विद द यूएई एक्टिवेटिंग द Cheonggung 2 and the US deploying prototype systems alongside Patriot and THAAD. Interceptors like PAC-3, MSE, SM-6, AIM-9X are being rationed amid saturation attacks as production remains far slower than current combat use. Iran is using Bawar 373, Arman, BMD, Sevam, Khordad, and Tor M1 systems, but sheer volume and reload gaps may be overwhelming its interceptors. Basically, मिसाइल को रोकने वाले आप कह सकते हैं मशीन्स हैं,
जो मिसाइल्स को पहले इंटरसेप्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, देन उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। ठीक है। How is this conflict different from 12-day war? What is missile defense? How does it work? How effective are Iron Dome and Patriot system? Can saturation attacks exhaust interceptors? What systems are Iran deploying? Yeah, पढ़ सकते हो, अच्छा article है if you are interested in defense and all, in how missiles and all work. इतनी ज़्यादा डेप्थ में क्लैट नहीं जाता है, but if you have रुचि towards it, definitely read it. How do astronauts return from space and survive re-entry? Essentially इस तरीके से एक पैराशूट लेके कैप्सूल में बैठ के कूद जाते हैं वो, ये कैप्सूल गिरता है समुंदर में, एंड दैट इज हाउ दे आर बैक ऑन अर्थ. Launch vehicles ascend battles gravity to gain orbital velocity, while re-entry is a controlled struggle against atmosphere to systematically shed that immense kinetic energy through aerobraking. Aerobraking कैसे होती है? इन पैराशूट्स के थ्रू हवा से ब्रेक लगाना, thermal protection and precise guidance within the re-entry corridor. Orbital velocity or escape velocity is the velocity you need to escape the Earth's atmosphere against gravity. तो वो ascent के टाइम होता है. ठीक है. रणजी ट्रॉफी पे क्विज. बाय द वे, रणजी ट्रॉफी में इस बार नया विनर है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ के जाना है इसका. रणजी ट्रॉफी इज अ डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट. एंड इस बार जो है जम्मू कश्मीर की टीम, ये स्टेट वाइज होती है इनकी टीम्स, जम्मू कश्मीर की टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है कर्नाटका को हरा के. कर्नाटका वैसे 8 बार की चैंपियन रह चुकी है, एंड जम्मू कश्मीर पहली बार जीती है. सबसे ज्यादा बार आई थिंक मुंबई ने जीती है ये ट्रॉफी. तो थोड़ा सा पढ़ के जाना रणजी ट्रॉफी के बारे में. किसी को पता है रणजी ट्रॉफी इज नेम आफ्टर होम? किसके नाम पे रखी गई है रणजी ट्रॉफी? एनी क्रिकेट नर्ड इन द चैट who can tell me the answer to that question? Okay, will leverage tech to crack down on market manipulators, says SEBI chief. SEBI के हमारे चीफ हैं तुइन कांटा पांडे, टीके पांडे. एंड वैसे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट ही सिंपली सेज दैट market regulator is using AI to educate investors. He urges people to use tools like SEBI Check to deter fraudsters and warn against financial influencers promising astronomical returns. He says SEBI will make sure there is no instability in the markets. ठीक है. Countdown to BJP's exit has begun, says आम आदमी पार्टी चीफ. अरे हाँ, बाय द वे केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं लिकर स्कैम केस में. हमने किया डिस्कस पिछली क्लास में, आई थिंक किया था. तो कोर्ट ने जो है इनको डिस्चार्ज कर दिया है. एंड या काफ़ी इंटरेस्टिंग. कोर्ट को कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला ट्रायल स्टार्ट करने के लिए भी, सो एक्विट नहीं किया, डिस्चार्ज कर दिया केस की. भाई केस बनता ही नहीं है. GST collection increases by 8.1% to over 1.83 lakh crore. Most SIR adjudication cases in Bengal are from Muslim-dominated districts. NSUI holds fort in Patna University Student Union poll. Indians among injured in Iranian strike, says UAE. Conflict between US, Israel, and Iran sends shockwaves across West Asia. Oil tanker with Indians among crew hit off Oman coast. 8 Indians stuck in Karachi airport after aircraft diversion over the conflict. External Affairs Ministry urges foreign nationals who could not leave India to contact their nearest FRRO for visa extension and stay regularization. FRRO is Foreigners Regional Registration Office. Protest in Kashmir over Khamenei killing, schools closed for 2 years. So Iran is a Shia-dominated Muslim country. Rest of the Arab world is primarily Sunni-dominated. 85% approx is Sunni Muslims, and 15% across the world are Shia Muslims. तो Shia Muslims के religious leader भी माने जाते थे Ayatollah Khamenei, and that is why protests are being seen in other countries as well, like India. ठीक है जी. Center flags risk of violence after US-Israel strikes on Iran. All right. Party say killing of Khamenei is unlawful. Center's response to Iran war is betrayal of India's values, principal interests, says Congress. Okay. Institutions, including the courts, must acknowledge errors, says Abhishek Manu Singhvi. He's a senior advocate. Use AI like a co-pilot, not as autopilot, says VIT president. VIT is a college, popular engineering college, Vellore Institute of Technology. ओके ठीक है. यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए.
Arbitrage funds profiting from the price gaps in volatile market. Not important for you. Arbitrage is essentially using the fluctuation in different currencies to your advantage. मान लो डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो आपने जब कम थी तब वहाँ पे खरीद लिया, जब ज़्यादा थी तो यहाँ पे बेच दिया. That is called arbitrage. That is how forex markets also operate, foreign exchange. Iran strikes on Israel kill 9, 3 US service members are dead, 5 are hurt. Iran's Revolutionary Guards IRG launched large-scale attack, causing explosions in Riyadh, the capital of Saudi, Dubai, which is a city in UAE, Abu Dhabi, which is also in UAE, Doha, which is the capital of Qatar, then Manama, Jerusalem, Tel Aviv, and Saudi Arabia intercepting missiles. Pentagon denies Iran's claim of striking USS Abraham Lincoln. This is the aircraft carrier of US. Pentagon is US का defense system. At least 22 killed, over 120 hurt in protest across Pakistan. Okay. Rubio drives Trump's war agenda. JD Vance and MAGA base are confused. MAGA is Make America Great Again. JD Vance is the vice president, as we all know. Marco Rubio is the secretary of state, most of you know. And this article explains how there is an internal divide between this MAGA movement, जहाँ पे दो की फिगर्स हैं, एक तरफ जेडी वैंस वाला गुट है, एक तरफ मार्को रूबियो वाला गुट है. And they say how the new US war against Iran shows Rubio's worldview has won over JD Vance's worldview and Trump's earlier anti-war promises. JD Vance's view is more of an anti-interventionist kind of a view, which was also Joe Biden's view, where they want to focus on fixing America internally. The belief is that US should avoid these endless wars and national revival must happen at home. Cultural and social repair is more important than foreign wars. And they look at Russia as more of a civilizational ally rather than a military enemy. And दूसरी साइड मार्को रूबियो का जो व्यू है दैट इज द इंटरवेंशनिस्ट व्यू, व्हिच मींस इंटरवेंशन करेंगे दूसरी कंट्रीज के अफेयर्स में एंड दे वुड फोकस ऑन डिफेंडिंग एंड एक्सपैंडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन and make US and Europe a shared civilizational mission, taking global leadership, where they look at wars as not mistakes but taking control of certain regions. And yeah, that's pretty much it. The view is America must lead the West globally, even if it takes war. अब ये जो डिफरेंस है, ये जो कंट्रास्ट है, दिस वाज आल्सो क्लियरली विजिबल इन द स्पीचेस व्हिच हैपेंड एट द म्यूनिक security conference, जहाँ पे JD Vance criticized European elites and focused on internal national restoration, whereas Marco Rubio spoke of shared Western heritage and blending MAGA with the neo-conservative ideas. JD Vance ने 2025 में दी थी speech, Rubio ने इस साल दी है, which received an applause from European governments as well. एंड आर्टिकल यही कहता है कि ये जो वॉर है ईरान के साथ, दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग गोल ऑफ द यूएस नियो कंजर्वेटिव्स, जहाँ जो जस्टिफाई करते हैं प्रीवियस वॉर्स को भी, चाहे वो अफगानिस्तान वाला वॉर हो, चाहे वो इराक वाला वॉर हो, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे वो लीबिया वाला वॉर हो, चाहे वो सीरिया वाला वॉर हो, चाहे वो कोरिया वाला वॉर हो. दे थिंक ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्रोजेक्ट एंड रूबियो इज इन्फ्लुएंसिंग ट्रम्प टू मूव टुवर्ड्स दिस इंटरवेंशनिस्ट पाथ. ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे. अभी के लिए तो इंटरवेंशनिस्ट पाथ इज विनिंग, बट आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आई होगी यूएस की पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है. Samsung delivers at crunch as India enters semi-finals. This was such a crazy match. जहाँ पे दिस वाज वर्चुअल क्वार्टर फाइनल. इंडिया हार जाती तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, वेस्ट इंडीज जीत जाती तो आगे चली जाती, बट इंडिया वन, चेजिंग अ टारगेट ऑफ 195, 196, 185 आई थिंक. And Sanju Samson played a very critical inning of 97 runs. He was being doubted for quite long and not playing to his true potential. But what a redemption! What a revenge तो कहना सही नहीं है, but what a comeback is, I would say. This is him thanking God after the winning runs. Samson is a world-class player and he paced his innings well, says Gambhir, who's the head coach of the Indian team. South Africa trumps Raza's brilliance, extends winning run. South Africa is still undefeated in this World Cup.
लास्ट मैच था उनका जिम्बाब्वे से, ऑल्दो दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड. केस ऑफ सो नियर एंड गेट सो फार फॉर अ स्टार स्टडेड कर्नाटका टीम. दिस आई वाज टेलिंग यू कि कर्नाटका जो है हार गई जम्मू एंड कश्मीर से. ठीक है. Chennai Super King kickstart prep for this season's IPL. Thala is coming back. Apparently, he was seen practicing in the nets. PV Sindhu is also stranded in Dubai. All right. Arsenal keeps 5-point lead with a nervy win against Chelsea. All right. ठीक है ठीक है ठीक है. बाकी ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम से हार गई इंडियन विमेन टीम, which is a bummer, but ठीक है कोई नहीं, हार जीत लगी रहती है. JNK का मैंने आपको बता ही दिया. इनके स्किपर का नाम है डोगरा. Skipper Dogra represented Himachal and Pondicherry over a career spanning 2 decades and now lifts Ranji Trophy as the captain of JNK. All right, nice. Let's come back to our PPT and do the remaining articles. चैट में क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं. Gopal is saying Mr. Ranji. That's a good guess, but not quite accurate. Sora is saying Ranjit Singh ji. Yes, that is the man behind the Ranji Trophy. It's not Ranjit Singh, it's Ranjit Singh ji. And he was the first one to play international cricket. Correct. He broke down. Yes, Arvind Kejriwal broke down. He was trying to cry. हुआ क्या था केजरीवाल के साथ? केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था in a liquor scam case, along with other Aam Aadmi Party leaders like Manish Sisodia and all. Friends are stuck in Saudi Arabia because of cancelled flights. I hope they are safe. I hope they return back safe. Alongside Kashmir, I remember protest outside US consulate in Chennai. Okay. Israel just said they're gonna get Turkey now, a NATO member. I think it's all talk. Let's see. Most watched T20. Yeah, viewership was off the charts. Thank God they did not let Dubai bowl. Yeah, that's true. It was the highest chase in T20. Yes, इससे पहले the highest chase था, that was just 173. And this in World Cups. T20 World Cups में this was the highest chase ever. इससे पहले जो top chases थे, most of them were led by Virat Kohli. So he also broke Virat Kohli's record of highest individual runs scored in a T20 World Cup chase, which is now 97, held by Sanju Samson. Pehle it was 82, held by Virat Kohli, which he did twice, once against Australia, once against Pakistan. It's crazy how I remember these stats. Okay, Indian F1 scene also developed. Yes, of course, 100%. Recently I saw the videos. F1 फिर से रिवाइव हो रहा है इंडिया में. Let's see, let's hope. क्रिकेट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए if you don't know anything about it? That's a very interesting question. देखो, if you want to know, if you want to get into it as a sport, then that's a different answer. But from a CLAT perspective, just the major tournaments, जैसे रणजी ट्रॉफी is a major tournament, तो उसका विनर किसको हराया, कौन कैप्टन था, बस. IPL हुआ, कौन जीता, किसको हराया, कौन कैप्टन था, किसने सबसे ज्यादा रन मारे, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए. फिर अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इस साल, तो कौन जीता, किसको हराया, किसने सबसे ज्यादा रन मारे, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, बस इतना काफी है आपके लिए. ठीक. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स पीपीटी. यूएस, इजराइल एंड ईरान की बात हमने वैसे करी है, बट थोड़ी सी मैप पे समझते हैं कि क्या क्या वाटर बॉडीज हैं आसपास. सबसे पहले ये रहा आपका ईरान, विच यू कैन सी इज अ बिग बिग लैंड मास. इट्स नॉट स्मॉल बाय एनी मींस. यू कैन सी द कैपिटल तेहरान. Then this is the Strait of Hormuz, and at one point this is barely 21 miles in width. किलोमीटर में कितना हुआ, 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, मोटा मोटा उतना हो गया. ठीक है, अराउंड 34-35 किलोमीटर्स इन विथ. सो दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से आपका ये सारा ऑयल जो है पास करता है. ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, यू कैन सी. यहाँ ओमान है, ये ओमान की कैपिटल है मस्कट. यहाँ पे आपको दिख रहा है इराक, इराक की कैपिटल बगदाद. यहाँ पे द रिवर्स यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस आर फ्लोइंग, एंड देयर इज द पर्शियन गल्फ, जहाँ से सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ओमान, कतर, ये सब अपना ऑयल यहाँ से भेजते हैं. एंड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसे बाहर निकलता है गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, फिर जहाँ भी जाना होता है जाता है. क्योंकि ऊपर तो देखो लैंड लॉक्ड है ना, इराक
So यहाँ से तो जाना मुश्किल है. So सी रूट जो है, प्राइमरी सी रूट यही है जहाँ से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेवल्स to the outside world. And Iran is at a very strategic position. It holds the northern, you could say, border of Strait of Hormuz, and here this place is called Bandar Abbas. यहाँ पे they are putting up a naval blockade. यहाँ से थोड़ा सा पास में ही you can see the चाबहार पोर्ट, जहाँ से इंडिया ट्रेड करता है विद द रेस्ट ऑफ वेस्ट एशिया. उसके साइड में है ग्वादार पोर्ट. यहाँ इस साइड आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा, ऊपर साइड आपको वो दिखेगा अफगानिस्तान. एंड दिस वाटर बॉडी इज द गर्बोगास बे. देन इस साइड आपका रेड सी है, इस साइड आपका यमन है, इज द कैपिटल सना. इस साइड आपका इजिप्ट है, एंड ऑल ऑफ दोस अफ्रीकन कंट्रीज. So yeah, this is how the geography of the place looks like. It's very important that you guys know the geography of the place, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है वाटर बॉडीज के बारे में, कौन कौन सी वाटर बॉडीज आसपास हैं. ठीक है, सही. तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या मैप पे जाके भी दे सकते हो. आगे चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा था. ईरान वाउड रिवेंज ऑन संडे आफ्टर किलिंग ऑफ सुप्रीम लीडर, ट्रेडेड स्ट्राइक्स विद इजराइल एज अ पार्ट ऑफ वाइडनिंग वॉर prompted by US and Israeli bombardment a day after. Donald Trump warned that any retaliation would only lead to further escalation. He said he would be talking to Iranian leaders, but was vague on the timing and noted that much of the country's leadership was dead. They want to talk. I have agreed to talk, so I will be talking to them. They should have done it sooner, he quoted. Blast in Tehran sent a huge plume of smoke into the sky in an area where there are government buildings. Iranian state television said it has been targeted by the strikes. Authorities say 200 plus people have been killed since the start of these strikes. Ayatollah Ali Khamenei and other senior leaders also were killed. Iran fired missiles over ever-widening list of targets in Israel and Gulf Arab states in retaliation, while Israel pledged non-stop strikes against Iran's leaders. Loud explosions heard in Tel Aviv. Israel's rescue services said 9 people were killed, and this synagogue was hit in the central town of Beit Shemesh, bringing the overall death toll to 11. US military said 3 service members were killed, 5 wounded in the operation. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो यूएस ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है, पेंटागन ने नाम दिया है, दैट इज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. एंड इजरायली गवर्नमेंट ने इस ऑफेंसिव ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन. ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं. यूएस की तरफ से एपिक फ्यूरी, इजराइल की तरफ से रोर ऑफ द लायन, एंड ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन है उसका नाम रखा गया है ट्रू प्रॉमिस वॉर. तीनों नाम याद होने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. Next article is regarding the 16th Finance Commission. Do we need to know capitals? I think it would be nice if you can know the capitals of the neighboring countries. So yes. Shaurya Singh is 33 kilometers. Thank you for correcting. My maths is not my strongest suit. So I was saying, sir, can Iran seize Hormuz? It's governed by UNCLOS. 100%. But when in a war, everything is fair in love and war. Have you heard that saying? So, I mean, UNCLOS is the last thing which would be stopping them. I would say it's just an international convention, law of the sea. So I don't think they really give a damn about UNCLOS as of now. When missiles चल रही हैं चार तरफ से. Didn't Iran have an operation named Seal of Prophets? We'll have to check that. मैंने तो यही नाम सुना, चेक कर लेते हैं एक बार. Seal of Prophets क्या है? खत्म अल तूफान भी नाम है, सील ऑफ द फ्लड भी नाम है, एंड ऑफ द फ्लड भी नाम है. काफी सारे नाम रख दिए उन्होंने. ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा, दिस इज अनदर. दिस इज द इजरायली नेम. खत्म ऑल अनबिया. ओके, काफी सारे नाम हैं भाई. सील ऑफ प्रॉफिट्स, मिलिट्री बेस वॉन्स, सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर का नाम है सील ऑफ द प्रॉफिट्स. इट्स नॉट द ऑपरेशन. So Seal of the Prophets is the name of this military headquarter, and another name of the operation is Khatam al-Anbiya, or the Seal of the Prophets. Yes, you're right. Also, they're also calling it Khatam al-Tufan. भाई बहुत सारे नाम रखते हैं इन्होंने. चलो ठीक है, एक बार मैं इसको कंसोलिडेट कर लूँगा, फिर कल आपको फाइनली बताता हूँ कितने सारे नाम.
Alright, 16th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, मिसेस एंड कंसर्न्स. The 16th Finance Commission had significant flexibility in determining its approach and methodology, as its term of reference followed directly from Constitution, unlike other commissions that operated from central directives. This Finance Commission, as before, addressed two key dimensional fiscal transfers: vertical and horizontal. Vertical मतलब सेंटर ने स्टेट को कितने पैसे दिए, horizontal मतलब स्टेट ने आपस में कितने पैसे कैसे कैसे बांटे. Commission took note of the increase in share of states in the divisible pool of central taxes from 32 to 42 by the 14th Finance Commission. फिर reduction हुआ to 41% due to change in the status of J&K, and 16th Finance Commission noted the center's concern about reduction in its fiscal space. They also introduced a new criteria of contribution to reflect an efficiency consideration. It measured it through the share of the state's GSDP, the gross state domestic product. In an all-state GSDP, there is a need, however, to differentiate efficiency of production system from that of fiscal system. In production system, interstate distribution depends on many factors, which include interstate movement of financial and human resource. In the devolution formula, devolution is the exercise of transferring funds from center to state. The weight of some of the other criteria have also been changed. These are purely judgmental. Dropping the tax effort fiscal discipline criteria, which was fiscal efficiency criteria, is not consistent with the Commission's own narratives. They are criticizing the Commission for changing the criteria for devolution. क्या criteria हैं ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको. देखो 15th फाइनेंस कमीशन में ये क्राइटेरिया थे कि इतना परसेंट वेटेज रहेगा इन इन चीज़ों का इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग स्टेट्स. इनकम डिस्टेंस मतलब इनइक्वालिटी कितनी है इनकम में अमीर और गरीब लोगों में. देन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स का पहले 2.5% शेयर था, अब 0 हो गया है. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का पहले कोई शेयर नहीं था, अब 10% हो गया है. सो दिस एड्स अप टू 100%. दीज आर द चेंजेस. पॉपुलेशन का देखो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा फायदा होगा. जिन स्टेट्स में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कम हुआ है उनको नुकसान होगा बिकॉज इसका रेशियो कम हो गया है. एरिया वाइज भी जो छोटे स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि एरिया का वो बढ़ गया कम हो गया है. So yeah, that's it. Okay, Skill India has a Herculean challenge, Gilgotian blunders. A once-in-a-lifetime opportunity requires a Herculean effort. India's demographic dividend that ends by 2040 is one such opportunity. Several European Union countries and China have successfully financed skill systems. In these countries, 50% of secondary level students are enrolled in vocational educational streams. Vocational का मतलब एक तरीके से skill based कह सकते हो. In India, that share is 1.3%, reflective of an educational system that neglected school education till 1990 and vocational education till 2006. In 2020, new education policy, it said by 2025, 50% learners will be exposed to vocational education. Exposed still reveals an attitudinal problem among policy designers. Vocational education is in most countries is around 2% of education budget. For China and Germany, it's 11% of their budget. The Herculean task of making India the skill capital of the world is inconsistent with Gilgotian blunders. Issues of financing skills are crucial. The CAG in 2025 audited the flagship Skill India scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and 10 years ago it had similarly looked at compliance and oversight issues of skill institutions. Both reports raise issues of financial impropriety. मतलब फंड्स का सही यूज नहीं हो रहा. In 2015, the CAG dealt with financial reporting delays and unclear accountability of disbursed funds. In 25, the report mentions 94.5% of bank accounts were invalid and approximately 41% of trainees in short-term training achieved placement. So that's how things are going. इतना कैसे याद करें, करना पड़ेगा यार. Display of the title, seal of the prophets, and Hamas Operation Al-Aqsa flood. Okay. US lost 3 jets to friendly fire over Kuwait. Isn't it illogical to use population decide a financial plan from more than a decade ago? Why is the government so afraid for census? Yeah, political reasons हैं उसके. You guys know how vote bank politics works and how they have to keep all the states happy. They also have to keep the ruling states happy. They also have to keep the non-ruling states away from protesting. So it's political to a great extent. Population appeasement, because population equal to votes and votes equal to power.
ओके, वो कैप कर लेते हैं आज की। तो फर्स्ट वर्ड इज इनग्रेस। इनग्रेस मतलब एंट्री, एंट्रेंस इनटू समथिंग, एंड sentences with limited ingress and egress. Egress is the opposite of it. Exit to the freeway. The stadium is a frequent scene of bottlenecks. Entry, entrance, access are synonyms. Discharge, dismissal are antonyms. The action or fact of going in or entering, that is ingress. The next word is scrawled. Scrawled मतलब होता है ऐसे जल्दी जल्दी लिख देना. Write something in a hurried, careless way. Basically what you do when your last answer is left in the exam and 1 minute is left. Scribble, write hurriedly, write untidily. Someone had scrawled all over my notes. Last word is dissuade. Dissuade मतलब किसी चीज को करने से रोकना किसी को. Persuade someone not to take a particular course of action. So it's the ulta of persuade. Discourage, deter, prevent. Encourage, persuade are antonyms. Doctor had tried to dissuade patients from smoking. So dissuade is stop someone from doing something. Scrawled is writing in a hurried, careless manner. Ingress is entry or entrance into something. With that, we come to the end of today's discussion, folks. हाँ रिति, 100% मैं आपके मेल का रिप्लाई आज ही कर दूंगा फॉर श्योर। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट टुमारो इन अनदर सेशन। आपका जो स्ट्रैटेजी सेशन है दैट इज ऑन 5th of March। बाकी अभी के लिए हैप्पी होली, हैप्पी छोटी होली, हैप्पी जितनी भी होली आप सेलिब्रेट करते हो, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं हम लोग।